I think I am visible to all of you. Okay. Jai Jagannath. Welcome to Metsa Odia. आमे first time पे CBSE रो question भी solve करूचे through both Google Meet as well as हमारा YouTube platform रो. So हमारा first question है this को तुम्हें माने जो माने CHSE board अच्छे you can also join, but basically CBSE students must join this class, particularly OAB students. Okay. I think I'm not getting this. So जो माने तुम्हारा those who are CBSE students, they must join this class, otherwise it might be difficult for all of you. So in order to get a good mark you have to join this session. Okay, so the first section it tomorrow board in your board exam generally you will find the following section A, B, C, D, and you know all better. So first there is a question from electrochemistry. So there you have given that C applied external potential to the three cells. The potential is increased slowly till the opposing potential reaches the value of 1.1 volt. Okay, and you have to tell on the basis of this that which of the following statements is incorrect. So it hamara incorrect statement quota. The electrons flow from zinc to copper rod, hence current flows from copper to zinc in case of P. Then the chemical reaction takes place in Q till the opposing voltage reaches 1.1 volt. Zinc is deposited at the zinc electrode and the copper dissolves at the copper electrode in case of P. The electrons flow from copper to zinc and current flows from zinc to copper in case of R. So हमको देखियो पड़ियो PQR, right? PQR. We need to go for PQR. P रे कौन रही? See that in case of P, what is going here? P रे कौन रही? I am just doing zoom, enlarging this. You can see that P रे हमारा रही इटे कौन? P section रे तुम्हारा zinc is anode, right? Zinc is anode and copper is cathode. Zinc is anode and copper is cathode, which is an example of DAS. Zinc anode, copper cathode, which is an example of DAS. Galvanic cell or electrochemical cell? Very good. Here galvanic cell. This is your galvanic cell. Very good. Galvanic cell. आमे जानते zinc anode, copper cathode, because copper potential सबला high रहे in galvanic cell. And this one is again equivalent, and zinc here becomes as cathode and copper becomes an anode. So it current flows from current को to flow हुए. Here current flows from dash to dash. Pranam Subhastir, Pranam. Here current flows from dash to dash, zinc to copper or copper to zinc. Anyone? Current flows from dash to dash, zinc to copper or copper to zinc. You know that electron flows from zinc to copper, so current flows from copper to zinc. Current flows from copper to zinc. Okay. And here this is it is tomorrow electrochemical cell, right? This is an example of electrochemical cell, right? Is it? It is electrochemical cell, na? Is it? Please tell me, is it electrochemical cell or not? So here you will find that the current flows from in the direction that on the basis of current को to flow here zinc to copper. Zinc to copper, right? So here current flows from zinc to copper, and here current is 0, I is 0, as you can see that no one is cathode, one is anode. So हमारा भी जीवा electrons flow from zinc rod to copper rod, hence current flows from copper to zinc
इन केस ऑफ p रे हमरो कोठ कोठी की इलेक्ट्रॉन फ्लो होतला electron flows from zinc to copper and current flows from copper to zinc, so it is an correct one, right? Then the chemical reaction takes place in case of q till the opposing voltage reaches 1.1 volt. q रे chemical reaction होबो जे पर्यंत तुम्हारा 1.1 volt होबो, ठीक कि भूल? Is it correct or not? Electrochemistry first part, is it correct or not? 1.1 volt हला परे तुम्हारा आउ केमिकल रिएक्शन हबनी 1.1 वोल्ट जे पर्यंत न होइछि से पर्यंत रिएक्शन प्रोसीड हबो एंड व्हेन इट रीचेस 1.1 वोल्ट द रिएक्शन स्टॉप्स. इज इट करेक्ट और नॉट? No, sir. It is not a correct statement. Okay, next, zinc is deposited at zinc electrode and copper dissolves at copper electrode in case of p. so हमरो कोन होछि जिंक इलेक्ट्रोड रे डिपोजिट हबो, कॉपर टा डिसोसिएट हबो, माने कॉपर ताहले कोन होछि p रे एनोड and zinc रे this one is cathode. Who is saying in WhatsApp, sir please join me? Okay, zinc is cathode and copper is anode, it is saying that, right? Mo b को आसुनी, I am going to see it is zinc is cathode and copper is anode. zinc टा एडी anode ना, it is anode na cathode, zinc is but it statement रछि zinc cathode, it statement रछि zinc cathode हबो, तो एटा गोटे wrong statement or right statement? Sir, wrong. Wrong. Clear? बुझी होछि ना बुझा पड़नी? Is it understandable or not? If you are not getting me, please raise your voice. Okay, you can say me. Third point out के Yes, third point out के बुझे दे. थर्ड पॉइंट आउथर बुझे दोछि. तो सेठी कहला जिंक इज डिपोजिटेड, एठी कहला जिंक इज डिपोजिटेड एट जिंक इलेक्ट्रोड. अच्छा मते कहलो को जिंस डिपोजिट होछि आ गोटे जिंस लिबरेट होछि, डिसोसिएट होछि. डिसोसिएट टा कोड हुए, एनोड ना कैथोड? एनोड रे. एनोड रे डिसोसिएट हुए. सो कॉपर पार्ट टा एठी कहला दैट इज एनोड. अच्छा डिपोजिट टा कोड हुए बेसिकली कैथोड रे. आम एटा एक्टिव इलेक्ट्रोड को नेकी डिस्कस करिचे. सो कैथोड रे डिपोजिट हबो आ एनोड रे तुम्हारा डिसोसिएट हबो, किंतु एठी हमर कोन जिंस जनरल रहिछि p रे जिंक टा होछि एनोड बट कॉपर इज योर कैथोड. सो एटा होछि रॉन्ग आंसर, राइट? नेक्स्ट आर इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम कॉपर टू जिंक एंड करंट फ्लो जिंक टू कॉपर. करंट एटी जिंक टू कॉपर, yes. Electron flows from copper to zinc, yes. Is it correct? Already electron ro direction दे दी थी, you can see it already electron direction दे दी, so no need to bother about this. कार पोटेंशियल अधिक कार पोटेंशियल कम, ऑलरेडी एटा तुमरा गोटे जनरल क्वेश्चन बुक रे फर्स्ट. सो ए स्टेटमेंट भी करेक्ट, राइट? तापरे बी स्टेटमेंट को आसबा. बी स्टेटमेंट को मु एक्सप्लेन करूची, बुझे दोची जे कोन द केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन Q टिल द अपोजिंग वोल्टेज रीच 1.1 वोल्ट. तो आम यार जदि यार सेल पोटेंशियल देखिबा, दिस इज 1.1 वोल्ट. आम जानचे Yes, sir. CHSE पिलांक पई, yes, CHSE दीपक गौड़, you can also watch the video, no issue. अविनेश सेट, प्रणाम अविनेश. दीपक गौड़ कहले सर CHSE पिला देखि परिबा कि CHSE पिला यू कैन आल्सो वाच, एटा देखि परिबो किछि किछि पोर्शन तुम्हारा नाही, जेमति एई क्वेश्चन टा बेसिकली तुम्हारा एई सेट ऑफ रिलेटेड क्वेश्चन बोर्ड रे नाही एक्चुअली सत कह बोले CHSE बोर्ड रे. तो किछि क्वेश्चन तुम्हारा CHSE पैटर्न रे टिके अलगा पैटर्न रे, CBSE रे अलगा रे, बट क्वेश्चन प्राय कांसेप्ट सबठी सेम. सो तुम्हारा जदी कांसेप्ट बिल्ड अप करियर अछि, यू कैन कम हियर, नो इशू. Again CBSE भी जो पिला माने अछन, they can also come to the morning session, that is at 5 AM if you want to improve your concept only, okay? But for exam purpose I will say that these questions may not ask in your board, CHSE board. These are basically designed for CBSE board. There is a difference in designing of question, okay? So let's come to the again question part. So here you will find that I is equal to 0. इठी current 0 रोची. तो current जे पर्यंत मन रखो, current से पर्यंत flow होबो जे पर्यंत तुम्हारा पोटेंशियल टा 1.1 वोल्ट रु कम थिबो, ठीक अछि? तुम्हारा जो एक्सटर्नल पोटेंशियल टा 1.1 वोल्ट रु कम होबो. एक्सटर्नल पोटेंशियल जेतोले 1.1 रु कम होबो, इट विल लुक लाइक दिस, फर्स्ट केस होबो.
যেତେବେଳେ 1.1 ସମାନ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ 1.1 ଭୋଲ୍ଟ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଏଠି କରେଣ୍ଟଟା ଫ୍ଲୋ ହେବ ନାହିଁ, ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ଲୁକ୍ ଲାଇକ୍ କେସ୍ କ୍ୟୁ। ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ପୋଟେନସିଆଲ ତୁମର ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ମାନେ ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ ହେଇଯିବ, when you find that external potential is greater than 1.1 volt, ସେଠି ସେଲଟା ରିଭର୍ସ ହେଇଯିବ, isn't Yes, it? sir. Okay. So तो आमे जदि कहिबा जे Q will act as a P until the potential is less than 1.1 volt. Is it true or false? मु कहूची Q act as P माने करंट फ्लो हबो जे पर्यंत तुमरा सेल पोटेंशियल टा 1.1 रो कम रही, तो धीरे धीरे एक्सटर्नल पोटेंशियल टा बढ़िबो ना संगे सडनली हम बढ़िबा ना, धीरे धीरे एटा इंक्रीज कर हम P रू Q रू R को जाउची, सो हमारा करंट फ्लो हबो। ओके ना बुझिले नि जस्मिन? Yes, sir. बुझले। So it is a correct statement. So what is the answer of this question? That is C. Option C. Option C. Let check. Actually मो टाइम पाई नथली तुमरो क्वेश्चन को प्रैक्टिस करे पई, नेक्स्ट टाइम ए भले हबनी, मो CHSE पॉइंट सफिशिएंट टाइम देतली। सो इट रही ऑप्शन नंबर सी। ओके, ऑप्शन नंबर सी हो द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Two compounds M and N have general configuration formula this but different structural formula. CnH2nO। ठीक है, CnH2nO माने सेठी कौन कौन है पारे? इट कैन बी इथर, मन रख इथर, एडा इथर है पारे, आल्डिहाइड है पारे कारण आल्डिहाइड रो फार्मूला CHO, कीटोन भी है पारे। ओके, आउ कौन है परिबो? बस ए तीनटा ही पॉसिबिलिटी है परिबो, राइट? ठीक अच्छे, आल्डिहाइड है पारे, कीटोन है पारे, इथर भी है पारे कारण इथेन रो फार्मूला भी R1। द कंपाउंड N belongs to that homologous series where the first member contains 3 carbon atoms. The compound N belongs to the homologous series where the first member contains 3 carbon atoms. अच्छा, तापरे कौन कहे compound M reacts with one equivalent of monohydric alcohol in presence of dry hydrogen chloride to yield a hemiacetal. अच्छा, हेमिएसिटाल अल्कोहल सहित किए रिएक्ट कले हेमिएसिटाल दिए, आ अल्कोहल सहित किए रिएक्ट कले हेमिकीटाल दिए। Anyone can say hemiacetal and hemiketal? It is somehow related to the chapter aldehyde and ketone chapter. मो hints कह देली मते को बर्तन हेमिएसिटाल रे तुम्हारा हेमिएसिटाल कथा दितले कहला, हेमिएसिटाल पई के कहा सहित रिएक्ट कले हेमिएसिटाल दिए, हेमिएसिटाल हमें कहा सहित के रिएक्ट कले हेमिएसिटाल पाइबा। एनीवन जल्दी क्विक? क्विक जल्दी कुह ना कहि परिबनी? आपण एटा कर दियंतु, अल्डिहाइड कीटोन क्लियर नहीं आ। ओके ओके मु कहबी। ठीक अछि, अल्डिहाइड आमे देखिबा आगो अल्डिहाइड। ठीक अछि, क्वेश्चन को डिटेल्स मु कहली ना, मु आज भी से भलिया तुमरा 12th CBSE CHSE पिलांगर भी के जने बहुत रिक्वेस्ट करछि WhatsApp रे, सर कोन कुरकुरी कहउछन्ति कि कौन कुरकुरी, व्हाट इज Chandra, leave it. Okay, so RCHO aldehyde और कीटोन रही है। ठीक है, aldehyde को जदि हमें अल्कोहल सहित रिएक्ट करिबा लाइक R-OH मधुमिता, then R-H R-OH मधुमिता, are you there? मधुमिता, can you hear me? मधुमिता सुनी पारछ अच्छी कि मधुमिता? ओके ठीक अच्छे सर। CHSE पिला कहीं CHSE पिला एटा एक्चुअली CBSE पिला आर्टिस्ट मधु। ओके, सो
नो यू कैन जॉइन कोई थरे लाइव होचे एटा यूट्यूब रे आ गोटे हमर रहिछि आ गोटे हमर गूगल मीट रे ओके ओके कम्स टू दैट चैप्टर अगेन सो दिस वन इज aldehyde दिस वन इज अल्कोहल राइट अल्कोहल रे अच्छा aldehyde कीटोन रे मते को पोलराइजेशन हेले ये जो डबल बॉन्ड टा कहा पाकू शिफ्ट हो ऑक्सीजन बा ना कार्बन पाकू during polarization the double bond will shift towards this oxygen or carbon oxygen yes because it is more electronegative so it is delta minus this one is delta plus लिप्सा जो माने भी अच्छो क्लास रे if you are unable to understand please raise your voice unless you raise your voice I cannot know तुमको किछि भी जाने नहीं like aldehyde माने कौन still you have to ask okay still you have to ask that aldehyde माने कौन कीटोन माने कौन आर्टिस्ट मधु एंड क्राफ्टी तुमको गूगल मीट रे जॉइन करिया गले तुमको डायरेक्टली यू नीड टू बी इन टच ऑफ ओके तो एटी प्लस एटी माइनस रहइबो अल्कोहल जदि हम देखिबा अल्कोहल रे OH माइनस आर डैश प्लस रहइबो ठीक अछि तो ये कोन करिवो रिएक्शन करिवो राइट रिएक्शन करले OH माइनस टा जीवो प्लस पाखो को आ ये कोन करिवो आर डैश को टानिवो सिमिलर वे रे ये भी आर डैश को आर डबल डैश को टानिवो OH माइनस जीवो या पाखो ओके now comes to this part that R bond C bond O minus R dash so it becomes as OR double dash and further it H को H as usual this is OH is it clear बुझियला yes sir and here again OR double dash but here you will find R dash and here OH so हमें जदि देखिबा this one is known as एटा तुम्हारा aldehyde टा initial reactant is aldehyde so this is known as hemiacetal aldehyde जेतले रिएक्ट करियो you will get hemiacetal aldehyde रिएक्ट करले ओके आ जेतले कीटोन रिएक्ट करले you will get hemiketal is it clear yes sir are you writing these things or not you are just looking these things only Lekhuch, very good try to note all the things because I am also writing you should also write all the things accordingly देखिवा से तो देखी लेख भी ठीक अछि तापर फर्दर भी ये रिएक्ट कर परियो लाइक इट कैन आल्सो रिएक्ट विथ दिस अल्कोहल अगेन okay this can also react with this alcohol again now what will happen here that again there is a possibility that this oxygen will react with alcohol okay and wait yes it is correct so it will react with this carbon right so it react kala pare kon hobo na it becomes as R bond C bond O R double dash H को मु तळे रखि देली ओके H को तळे रखि दोछि एटा को राइट साइड को आनि दोछि OH it becomes as OH किंतु एई H रे दीटा लागि छि गोटे पटे H लागि छि गोटे पटे R डबल डैश रहि छि आ एटा प्लस रहबो एटा माइनस रहबो OH माइनस स्टिल देयर राइट किंतु एई ऑक्सीजन रे प्लस चार्ज रहबो राइट बुझियला ना बुझा पड़लानी सर हमर H टा कटि गला नहीं कोटा कटिनी एबे ऑक्सीजन रे ओ एटा ओ आर डैश सहित बॉन्ड कला ए बॉन्ड टा कंप्लीटली ब्रेक हे गेला ठीक अछि OH माइनस आर डैश प्लस सो एटी तुम्हारा प्लस चार्ज रहिला इनिशियली तापर फर्दर जदि हम देखिबा टिके परे ये कोन हे जाउची आर आउ गोटे पैटर्न हे जाउची एटी जेहेतु प्लस चार्ज रहिची ए OH माइनस तुम्हारा फर्स्ट स्टेप रे बाहर की थिला तुमे देखुचो ए स्टेप रे OH माइनस थिला राइट आर यू गेटिंग OH माइनस तुमको एक क्रॉस मार्क देखा जाउची ना यस देखा जाउची OH माइनस थिला सो ए OH माइनस टा कोन कला OH माइनस टा प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट कला एंड अगेन दिस प्रोटॉन विल बी लॉस्ट आ एटी वाटर हिसाब रे माइनस H2 हे जो वाटर रे की पळेबो ए टोटल थिंग्स टा OH माइनस H मिसी पळेबो आ एटा कोन हे जिवो R bond C bond O R double dash again this is O R double dash this is H is it clear is it clear yes sir yes sir okay this is known as your kita acetal this is known as acetal so या आगो स्टेप रे थिला hemiacetal एटा आसीबो acetal ठीक अछि ए पार्ट आसीबो तमरो या को आसीबो acetal
तापर आम सिमिलर वे रे कीटोन सहित भी रिएक्ट करवा सिमिलर वे रे कीटोन सहित रिएक्ट कले ऑक्सीजन रे एठी भी लोन पेयर रही ये भी तुम्हारा रिएक्ट करिवो आर डे सहित अगेन OH माइनस एक रिलीज होगी पड़ेबो OH माइनस पुणी अथरे रिलीज होगी गला पर एठी तुमरो कोन हो R बॉन्ड C O R डबल डैश मु टिके मेकानिज्म वे रे बुझौची सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड नले जल्दी बुझार थिला आ जल्दी बुझी थम सो एटा O H गोटे पट रहइबो R डबल डैश आ गोटे पट रहइबो अगेन हियर यू विल फाइंड पॉजिटिव चार्ज रहला पर फर्दर तुमरो कोन होची एटे OH माइनस रहिची OH minus will abstract this proton and again here H plus will be released our bond ta break hejo and you will get the compound here. What is the name of this compound? A compound ta kon hobo na ta kon hobo idar cheda jendi acetal eta kon hobo na anyone try karo but yes कीटल very good कीटल eta ki कहले ना ki कीटल की कहला सर के कीटल के कहलो वेरी गुड के नाटा तुम्हारा कौन स्मृति अच्छा एक्चुअली मु समस्त वॉइस से एक्वाइंटेड नहीं ना से मत वॉइस रो ना को जानिया पड़ो अदरवाइज आई कैन नॉट नो ओके इज इट क्लियर अबाउट हेमिएसिटल एसिटल कीटल हेमिकीटल क्लियर ऑल थिंग्स यस ओके एठी आर्टिस्ट मधु एंड क्राफ्ट सर लिंक दियंतु लिंक ऑलरेडी सेंड ही सरची मा हमरो गूगल मीट रो लिंक ऑलरेडी पठाई सारची कोठी तुमर जो माने मो सहित कनेक्टेड अच्छा समस्त को लिंक पठाई सारची यू कैन जॉइन दिस लिंक एनी टाइम जेतोले क्लास टाइम रे जॉइन कर परियो ओके आल्डल कंडेंसेशन ऊपर टिके कोंदो आल्डल कंडेंसेशन एबे नो जेबे क्वेश्चन आसीबो आल्डल कंडेंसेशन करबा बिकॉज़ एल्डिहाइड कीटोन रे मो ऑलरेडी पढ़ाई सारची से विषय रे ऑलरेडी तार वीडियो भी मो पाके अछि यू कैन आल्सो गो थ्रू वर्षा पंडा आई वाज वेटिंग फॉर यू बट somehow I found that you might have any problem that's why you did not join okay no issue next हमर ये थिला ताले मेरे इडे कोन कहला कंपाउंड M reacts with one equivalent of monohydric alcohol माने गोटी OH थिबो in presence of dry hydrogen chloride अच्छा ये रिएक्शन जति कि सब होची these all are reacting in presence of dilute HCl सब गुडा को डाइल्यूट HCl रो प्रेजेंट नहीं होचे सब गुडा को रिएक्शन ठीक अछि मोडे रिएक्शन रो लिखिया को भूल जाइतिली लेट मी राइट हियर डाइल्यूट HCl यू शुड आल्सो राइट दिस डाइल्यूट HCl ए गोटे गोटे क्वेश्चन को हमें भले एनालाइज करबा डोंट वरी गोटे गोटे क्वेश्चन को पूरा डिटेल्स रे एनालिसिस करबा सो दैट इट कुड बी क्वाइट इजियर टू अंडरस्टैंड सो M ताले इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड टू यील्ड ए हेमिएसिटल हेमिएसिटल माने कोन ताले एटा कोन थिबो एल्डिहाइड ने कीटोन एमडा हेमिएसिटल लेले इट विल बी एल्डिहाइड और कीटोन व्हाट इज दैट के बारंबार जॉइन करिया को चाहू छी लेट हो जाय वर्षा पंडा जॉइन वर्षा पंडा जॉइन करो क्विक वर्षा पंडा जॉइन करो क्विक yes aldehyde yes Varsha you are right Varsha Panda जब join करियर अछि join करो quick okay आउ एथर परे ऐड करबिनी कहीं ना मते डिस्टर्ब होछि बारंबार गोटे फेज रो आउट फेज को आसे ऊपर यू कैन सी दैट आई एम गोइंग टू वन पार्ट टू अनदर पार्ट मत सब गुडा को चेंज कला आउट टाइम पड़ेबो ठीक अछि हां तो एठी क्लियर हैला एटा aldehyde yes जस्मिन को सर हेमी अल्कोहल थिले त हमर एसिटल होछि aldehyde थिले हेमिएसिटल ला एसिटल हो कीटोन थिले हेमिकीटल हेमिकीटल पर कीटल देबो एठी किंतु गोटे हाफ पार्ट करी की रखाई जाई छी ठीक अछि आ गोटे कहै छी वन इक्विवेलेंट ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल माने एठी टू इक्विवेलेंट जदी कहि थांदा ताले कोन हे थांदा आंसर 2 equivalent of monohydric alcohol what would be the answer की कहि परिबो एडे हेमिएसिटल बदल रे कोन हेथांदा 1 बदल रे 2 yes कोन हबो आई एम नॉट गेटिंग सही मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का माने गोटी अल्कोहल ही हबो बट दीटा इक्विवेलेंट 2 इक्विवेलेंट माने दीटा मोल निया जिवो एडे दीटा मोल यूज हेथि ना दीटा मोल मोनोहाइड्रिक अल्कोहल माने गोटी OH रहबो कौन हम आंसर जल्दी हेमिएसिटल कौन दबो हेमिएसिटल बदल रे एटा कौन लिखाई थांदा यदि एटा 2 थांदा लेट इट बी 2 अब एटा मोनोएसिटल
mono acetal तो mono acetal कौन acetal तो only acetal clear it will only give rise to acetal जदि acetaldehyde थिबो acetaldehyde acetal propanaldehyde थिबो propanaldehyde acetal butanaldehyde थिबो butanaldehyde acetal pentanal थिबो pentanal acetal hexanal acetal clear ए भले ना रहइबो तार सर हेले आमे तो दिथरो करले जो डाइल्यूट हेक्सेन सहित आमे दिथरो आमे करिके आमे एसिटल बाहर करले नहीं टू इक्विवेलेंट मोनोहाइड्रिक अल्कोहल माने दीटा अल्कोहल नोचे जदि दीटा अल्कोहल नोचे एसिटल पाइबा गोटे अल्कोहल नोचे हेमी एसिटल पाइबा ये सर बुझिला एबे गोटे अल्कोहल नोचे यू आर इफ यू आर टेकिंग ओनली वन अल्कोहल यू आर गेटिंग हेमी एसिटल बट इफ यू आर टेकिंग टू अल्कोहल्स यू आर गेटिंग एसिटल again if you are taking two alcohol in with ketone then also you are getting ketal and मु आउथरे बारंबार रिक्वेस्ट करछि जो माने बेसिकली तुम्हारा सीबीएसई बोर्ड रा हमर ओएबी स्टूडेंट पर्टिकुलरली से मान को पई ही क्लास टा होछि दे शुड डेफिनेटली जॉइन मस्ट जॉइन टू एंश्योर योर मार्क अदरवाइज देयर इज नो वे टू एंटरटेन योर मार्क नरे तुमे तुम्हारा हैरान रे पड़ियो जे तुमे प्रैक्टिस करूना and if you are practicing from any other source then it is okay but still if you are not doing good then I say that 70% students of the school may fail सत कथा बहुत poor अच्छा you are very poor in chemistry not so good so हमारा m कौन आसीगला m टा कौन है गला m aldehyde है गला बुझियला clear अच्छा तुम कहबो सर कीटोन होबनी कि ना कीटोन होबनी अच्छा तुम कहबो सर इथर होबनी कि कारण हमें तीनटा फेज देखतिले तीनटा पॉसिबिलिटी देखतिले aldehyde कीटोन इथर aldehyde रो फार्मूला कोन aldehyde रो फार्मूला CHO RCHO राइट RCHO सो RCHO थिबारो एठी भी एभला जनरल फॉर्मेट आसपारे CHO माने कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन ही रहबो आउ किछि रहबोनी ऑक्सीजन दीटा रहबोनी कार्बन जति कि रहबो माने CXHYO एभला पैटर्न रे रहबो राइट एभला पैटर्न रहबो गोटी सिंगल ऑक्सीजन ही रहबो कीटोन रो फार्मूला कोन RCO ROR RDS RCO RDS वेरी गुड अगेन एडी भी तुम्हारो CH ही रहबो CXHYO केवल गोटी ही रहबो राइट इथर रो फार्मूला कोन ether RO RDS again here is also you can get CXHYO so तुम्हारा ए भला पैटर्न आसले पॉसिबल होची तीनटा कंपाउंड हे पारे दैट मे बी aldehyde that may be ketone that may be ether clear तो हमें देखिले जे एटा किंतु aldehyde ही हबो काहे कि कीटोन रिएक्ट करले हेमिकीटल देबो आ इथर एमती अल्कोहल सहित रिएक्ट करके ए भला किछि कंपाउंड देबो नाही क्लियर एम डा क्लियर हे गेला बिट 2 डा क्लियर हे गेला एम कोन aldehyde हे गेला but bit 1 amar clear ହେଇନି right compound n belongs to that homologous series where the first member contains 3 carbon atoms जेतेबेले तो ये गोटे होची homologous series मु कहि रखे all organic compounds जेते सब हमें डिस्कस करछे aldehyde ketone ether एमाने सब गोटे गोटे homologous series माने कोन से मान को भितर डिफरेंशिएट करि पई गोटे यूनिट यथेष्ट फॉर एग्जांपल मनर कहबी formaldehyde फार्मूला कोन formaldehyde H बा HCHO right HCHO देखें then तुम्हारा acetaldehyde फार्मूला कोन CH3 CHO good propanal CH6 sorry C2H5 CH right very good तो यार जनरल हम जो देखबा C गोटी H दीटा CH2 हला and this is C dita H4 C2H4 हो and this is C3H6O is it clear बुझियला अच्छा ए भीतर डिफरेंस केते कार्बन डिफरेंस केतरा अछि कार्बन डिफरेंस केते रहिछि सर गोटे कार्बन हाइड्रोजन डिफरेंस केते रहिछि दीटा अगेन एठी डिफरेंस केते रहिछि कार्बन गोटे हाइड्रोजन दीटा so if you are getting same type of things difference जदि डिफरेंस टा सेम रहलो ताल ताको आजिवो homologous series
ठीक अच्छे कह होमोलोगस सीरीज जदि एभला डिफरेन्स सबुठी पाइब तुम्हें बुझेगा ये 11th कॉन्सेप्ट मुझे पढ़ेनी पिला होमोलोगस सीरीज पढ़ा टाइम पाइनी बट एटा एमती रहिले यू विल गेट दैट दिस इज होमोलोगस सीरीज बुझेगा होमोलोगस सीरीज कौन हाँ तो आल्डिहाइड कीटोन इथर सब गुड़ाक होमोलोगस सीरीज सो देयर इज नो वे दे होमोलोगस सीरीज रो हमें पता माने जानि परिबानी वी कैन नॉट रिकॉग्नाइज व्हिच कंपाउंड इज इट सो एटा हमर किछि दरकार नै वेयर द फर्स्ट मेंबर कंटेन्स 3 कार्बन एटम्स सो हमको फर्स्ट मेंबर सब गुड़ाक देखियो पड़िबो आल्डिहाइड रो फर्स्ट मेंबर कोन व्हाट इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ आल्डिहाइड फॉर्माल्डिहाइड गोटे कार्बन रही फॉर्माल्डिहाइड ना फॉर्माल्डिहाइड और यू कैन से दिस इज आल्सो मिथानल आल्डिहाइड रो फर्स्ट मेंबर होची मिथानल राइट यस सर कीटोन रो फर्स्ट मेंबर कोन एसीटोन वेरी गुड यू शुड रिमेंबर आमर कोठु आरंभ होइतिला एक्चुअली इथर रो फर्स्ट मेंबर ता कोन मिनिमम जोड़ा CH3 OCH3 डाइमिथाइल इथर बा मिथोक्सी मिथेन क्लियर क्लियर यस सर तो आमे देखिबा एटी तीनटा कार्बन को कंपाउंड रहिछि आल्डिहाइड ना कीटोन ना इथर कीटोन जदि एटा दुईटा कार्बन थांदा इथर गोटे कार्बन थांदा आल्डिहाइड क्लियर अबाउट दिस क्वेश्चन ए क्वेश्चन को नेकी क्लियर हैला कांसेप्ट सो हियर n is equal to your what is n is equal to your aldehyde sorry ketone n is equal to ketone right is it clear so m होची गोटे aldehyde आउ n is a ketone को ऑप्शन दा अछि a b c d b compound m is an aldehyde and compound n is a ketone clear बुझियला क्वेश्चन आमे एभला डिटेल्स एनालिसिस करिया देखछो ना गोटे क्वेश्चन को केते टाइम मन होची पूरा डिटेल्स एनालिसिस करिया जे आउ कोन पॉसिबल हे पारंदा आउ याकू तो सबले क्वेश्चन सॉल्व कला बेले जनरली गोटे टीचर एटा होची रेस्पोंसिबल जे कोन कोन पॉसिबल हे परिबो जनरली डिस्कस करिया कथा सो दैट यू कैन आल्सो डू more questions next during a quiz competition team A and B have to tie a question on the character of RNA next adrika A team adrika और sakhu adrika and sakhu belongs to A raunak and ritama belongs to B category A response asila different RNA molecules of a cell are involved in the synthesis of proteins the single stranded helix of RNA folds upon itself to form the secondary structure then the C2 atom of the pentose sugar for a ribose nucleotide contains an OH group the message for the synthesis of a particular protein is present only in the RNA so ए भितरे को टीम रो दीड जगह आंसर ठीक अछि टीम A wins the quiz as both the responses are correct team B wins the quiz as both the responses are correct team A loses the quiz as adrika's response is correct team B loses the quiz as Raunak's response is correct तो हमको गोटे गोटे आगे एनालिसिस करियो पड़ियो different RNA molecules of a cell different RNA molecules of a cell involves different RNA molecules of a cells are involved in the synthesis of protein RNA को रिलेट करी मोर तो मन पड़नी कौन हम एटा जल्दी कह जदि कि जानिछ बुक ठीक अच्छे ना आर यू श्योर देखो मुझे जानी बिकज आई डोंट नो द कॉन्सेप्ट एक्चुअली सॉरी कॉन्सेप्ट कहूँ मु माने एते या ऊपर मोर इंटरेस्ट ही नहीं बायोमोलिकुल्स जनरली इट इज रिलेटेड टू बायोलॉजी तो मोर टिके आगर ही इंटरेस्ट कम सो आरएनए मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सेल आर इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन यस तुम्हारा डिफरेंट आरएनए मॉलिक्यूल रे जो नाइट्रोजन बेस थाए राइट नाइट्रोजन गुडाक आमिन ग्रुप गुडाक प्रोटीन सिंथेसिस रे हेल्पफुल हुए ओके ठीक अच्छे द सिंगल स्टैंडर्ड हेलिक्स ऑफ आरएनए फोल्ड्स अपॉन इटसेल्फ टू फॉर्म सेकेंडरी स्ट्रक्चर आमिन रो तुम्हारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर माने कौन रुए जोटा कि तुम्हारा अल्फा हेलिक्स ना बीटा सीट सेकेंडरी स्ट्रक्चर नहीं नहीं सेटा प्रोटीन रो सेकेंडरी स्ट्रक्चर कोटा थिला अल्फा हेलिक्स बीटा सेटा सेकेंडरी स्ट्रक्चर ना यस सेकेंडरी स्ट्रक्चर अल्फा हेलिक्स आउ बीटा सीट राइट तो तुम्हारा ये कहला जे सिंगल स्ट्रैंड हेलिक्स ऑफ आरएनए फोल्ड्स
upon itself to form the second. এটা completely memory based question. Biology ମୁଁ କହିବି biological field ଟା এটা memory based. এটা କ'ଣ ହେବ ଠିକ୍ ଅଛି କି ଭୁଲ ଅଛି? Let me look up the answer. ମୋତେ ଆନ୍ସରଟା ଦେଖିଦିଏ। এটা କିଏ ଜାଣିଛ? ବର୍ଷା କ'ଣ ହେବ ଆନ୍ସର କହିଲ? सर एटार ऑप्शन बी होबो आई थिंक। ऑप्शन ए ଦେଇଛି टीम ए विन्स। ऑप्शन ए अच्छा ऑप्शन ए टीम ए विन्स। अवश्य एमती करवा कथा नो एज ए टीचर बट आई एम नॉट सो गुड एट दिस सेशन आ मु प्रिपेयर ही पालेनी। सो ऑप्शन ए टीम ए दिस आंसर्स आर करेक्ट। सो नेक्स्ट हम जीवा नेक्स्ट आछि तुम्हारा द सिंगल स्ट्रैंडेड हेलिक्स ऑफ आरएनए फोल्ड अप इटसेल्फ टू फॉर्म द सेकेंडरी स्ट्रक्चर। निजे निजे फोर माने आरएनए फोल्ड अप हो परियो। ठीक अछि। नेक्स्ट C2 atom of the pentose sugar for a ribose nucleotide contains OH groups. Ribose nucleotide of a जदि हम देखिबा ribose nucleotide of a कोन रहिछि ribose nucleotide contains an OH group C2 atom protein रो। ठीक अछि एटा एटा भी ठीक अछि। यस एटा भी ठीक अछि। दिस इज आल्सो करेक्ट। ओके नेक्स्ट द मेसेज फॉर द सिंथेसिस ऑफ ए पर्टिकुलर प्रोटीन इज प्रेजेंट ओनली इन द आरएनए। केवल आरएनए रे ही अछि डीएनए रे नहीं। तार अर्थ एटा को जाउछि आरएनए रे ही अछि डीएनए रे नहीं। इज इट करेक्ट? यस सर आरएनए पर पर्टिकुलर सिंथेसिस आरएनए रे ही रुहे। सर भूल गए स्टेटमेंट। सर डीएनए तो प्रोटीन सिंथेसिस पे आरएनए ऊपर डिपेंड करे। यस एग्जैक्टली। ओ मु क्वेश्चन टा टिके पॉज करछु मु नेक्स्ट टाइम ए क्वेश्चन को डिटेल्स रे बुझी के आसी करी हला। लेट आउ टाइम वेस्ट करबानी ए क्वेश्चन टा को मु परे देखि करबो। ओके लीव द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। As it was somehow related to the field of biology, I was not sure about this question, but later on I will find the answer and again I will tell. What will the change in hybridization of carbon of a nucleophile attacks the electrophilic center of a carbonyl group? तो जितने आमर गोटे न्यूक्लियोफाइल अटैक करुच्ची hybridization of a C hybridization of carbon when nucleophile attacks the electrophilic center of a carbonyl group. तो कार्बोनिल ग्रुप कार्बोनिल माने अल्डिहाइड कीटोन आसीबो हला। कार्बोनिल ग्रुप माने अल्डिहाइड कीटोन नॉट अल्काइल हैलाइड। हालो अल्केन हालो आरएन चैप्टर नो। सो इधर अल्डिहाइड बा इधर कीटोन H और R डैश नहीं जाउची अल्डिहाइड बा कीटोन रे। तो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कोडा व्हिच वन इज द इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कार्बन ना ऑक्सीजन। कार्बोनिल ग्रुप रो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर माने कोठी पॉजिटिव चार्ज जनरली डेवलप होची कार्बन राइट। इट पोलराइजेशन हेले यू विल गेट डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस कि समय आगु मु कहथिले। सो दिस वन इज द इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। एडा होची इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कारण इठे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होची। सो इट इज इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। आ ऑक्सीजन डा होची हमर न्यूक्लियोफिलिक सेंटर राइट। आ ऑक्सीजन एडा को जो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर सेंटर अनुसार अलगा न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल अलगा न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर अलगा। ठीक अच्छे। न्यूक्लियस रो चार्ज कौन था न्यूक्लियोफाइल रो चार्ज कौन था माइनस ना प्लस? माइनस न्यूक्लियोफाइल। सो न्यूक्लियोफाइल एठी आसी के अटैक कला राइट। व्हाट विल द हाइब्रिडेशन? तो ये कार्बन रो हाइब्रिडेशन में कौन हो चेंज हो ना जिन छिंदी। अच्छा ये कार्बन रो हाइब्रिडेशन कौन थिला इनिशियली कार्बोनिल रो इनिशियली कौन थिला केतरा बॉन्ड अछि एठी सिग्मा बॉन्ड केतरा अछि इनिशियली रेड मार्क जोडा रहिछि रेड रेड तीनटा सिग्मा बॉन्ड तीनटा रहिछि चारटा चारटा गोटे पाई बॉन्ड रहि जाइछि। सो यू विल फाइंड दैट देयर आर 3 सिग्मा बॉन्ड्स है ना। मो गोटे अलग कलर न ब्लैक में अछि। यू विल फाइंड दैट 1 2 एंड 3 सिग्मा बॉन्ड 3 सिग्मा बॉन्ड रहले हाइब्रिडेशन कोन हबो sp2 वेरी गुड। ताहले हमर ऑप्शन नंबर बी कटिला ऑप्शन नंबर सी कटिला बी सी कटि गेले। ठीक अच्छे। ए sp2 sp है कि sp2 sp3 है। अच्छा आमर नुआ जो बॉन्ड अटैच कला से कौन है RCO माइनस ठीक अच्छे H एंड न्यूक्लियोफाइल। तो ये केतरा बॉन्ड है कार्बन रे चारटा है हाइब्रिडेशन कौन हम sp3 ताहले कोडा हम ऑप्शन आंसर को आंसर ऑप्शन दा ठीक हो ऑप्शन डी राइट ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके
नाउ कम्स टू द किछि आमे एग्जांपल देखिबा जोटा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन को फॉलो अप करूची न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रो कोन कोन एक्चुअली एग्जांपल रहिछि व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन मो एल्डिहाइड को एससीएन सहित रिएक्ट करली कोन पाइबी व्हाट आई विल गेट व्हेन वी ऐड एससीएन टू एल्डिहाइड what I will get when we add aldehyde with your outer coda right aldehyde with NaHSO3 sodium bisulfate already आम आउ गोटे एग्जांपल देखिए that is alcohol so ये तीनटा रोची ए रिएक्शन कैटेगरी अंडर रे आछे aldehyde similar to your ketone मो ketone आउ करूनी you will add R से जगह H जगह तुम R नहीं जीवो you will get the thing okay I'm not doing anything सो मते को एससीएन माइनस रे एससीएन रे कोडा नेगेटिव प्लस माइनस कोडा प्लस कोडा क्विक प्लस चेन माइनस ता एटा तुम्हारा S प्लस से बॉन्ड करिवो एंड व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ इट हियर RCO डबल बॉन्ड टा शिफ्ट है कि H सहित बॉन्ड करिवो दिस वन इज H दिस वन इज CN इज इट करेक्ट यस इज इट करेक्ट ठीक अछि हां नेक्स्ट हम जिबा एठी similar to your ketone also ketone जगह H बदल रे R dash रहिबो ए जगह ही चेंज होबो R dash हो comes to your next question your aldehyde when react with sodium bisulfate it will give rise to अच्छा ये नेगेटिव पार्ट कोटा रहिबो which one is the nucleophile here sir HSO3 no SO3 actually SO3Na SO3 actually SO3 is a electrophile actually sulfur trioxide is a electrophile कारण SO3 कथा जदि हम देखिबा एवला तीनटा ऑक्सीजन टोटल केतरा रहउची 1 2 3 4 5 6 7 8 6टा माने 12टा बॉन्ड रहउची राइट सो 12टा बॉन्ड रहिबारु सल्फर इज समहाउ और ये पोलराइजेशन हो जिवा जोगो सल्फर इज समहाउ यू कैन से दैट it is nucleophilic SO3 minus is nucleophilic okay SO3 ऑक्सीजन एटे इलेक्ट्रॉन डोनेट करिवो ठीक अछि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करिवो वेट एक्चुअली आमे एमदी डायरेक्ट लिखि दो SO3Na किंतु कोटा बॉन्ड करिवो मो टिके क्लियर हो जाए ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करले सल्फर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 10 इलेक्ट्रॉन सिस्टम नॉट ट्रेबल 12 थिला आ चारटा हले जीवो SO3 रे सल्फर से तो बॉन्ड करे सो इडे गले एक्चुअली इलेक्ट्रॉन SO3 माइनस सो ये ऑक्सीजन डोनेट करिवो ओके ऑक्सीजन डोनेट करिवो ठीक अछि ऑक्सीजन डोनेट करिवो से समहाउ विल फाइंड दैट OH एंड दिस इज SO3Na ओके SO3Na गोटे पटे O टा एडा H सहित बॉन्ड करिवो O will make bond with this hydrogen atom and remaining SO3Na I am not sure about this which one is the electrophile and which one is the nucleophile if you can google it it would be more better which one is the nucleophile during when type the question like नाल मु ए क्वेश्चन दा नेक्स्ट क्लास रे होबो जदी मु कहबी आसी और you can also simply google it which one is the nucleophile when aldehyde is added with NaHSO3 which one is the nucleophile when aldehyde is added with NaHSO3 actually I generally मो पाखरे आ गोटे मोबाइल रुहे से मोबाइल टा जणो दे दी सेतने मु कनेक्ट कर परने हले मु कहबी देखि कहि दी था किसी डाउट थिले ओके सो लीव इट एटी तुम्हारा SO3Na हबो हला आ एटी तुम हमें पढिले हेमिएसिटल हेमिकेटल दबो हेमिएसिटल फर्दर हेमिएस तापर स्टेप रे एसिटल दबो एबे कि समय अगर पढिले राइट अच्छा मते यार ना कोन SCN से तो ऐड करले कोन हबो प्रोडक्ट व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपाउंड SCN से तो ऐड करले कंपाउंड कोन दबो What is the name of the compound? SCN से ऐड करले isocyanide no it is not isocyanide this is cyanohydrin हला तो हमें ना लिखले aldehyde cyanohydrin
हाइड्रिन ठीक अच्छे बा कीटोन सियानोहाइड्रिन आल्डिहाइड सियानोहाइड्रिन और कीटोन सियानोहाइड्रिन इज इट क्लियर आल्डिहाइड सियानोहाइड्रिन ना कीटोन सियानोहाइड्रिन ठीक अच्छे ए जगह जब आरडेस रोचे कीटोन सियानोहाइड्रिन हम आ ये रहे माने प्रोपानाल सियानोहाइड्रिन ब्यूटानाल सियानोहाइड्रिन पेंटानाल सियानोहाइड्रिन हेक्सानाल सियानोहाइड्रिन देखो ये आल्डिहाइड कीटोन रो दुईटा क्वेश्चन ऑलरेडी पळे आसिला देखि पारछो ना एई भितर ही टिके मॉडिफाई रोचे तमरो लेवल क्वेश्चन ऑफ टिके मॉडिफाई रोचे और टिके डेप्थ रो क्वेश्चन तापरे एठी फर्दर या को कोन को जे व्हाट इज आल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड ओके बाइसल्फाइड आ ता एटा थिला सोडियम बाइसल्फेट दिस इज सोडियम बाइसल्फेट I would have a sodium bisulfite कहीं ये सल्फर ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुए सल्फर सहित ही बॉन्ड करिवो किमती बॉन्ड करिवो मु टिके क्लियर होई पारनी कहि पर नेक्स्ट देखिए इज इट क्लियर बुझिला समस्त को ना कोई डाउट अछि ओइठी बुझिला इज इट क्लियर shall we go to next question Yes, sir. okay next question is 4 compounds here you have given 4 compounds that is CH3Cl that is methyl chloride CH3Br methyl bromide and ethyl bromide C2H5Br then this is propyl iodide are represented by letters MNOP given in the table in random order the boiling point are given as boiling point आमे देखिचे जे जते कार्बन बढ़िबो boiling point कोन हबो increase हबो कि decrease हबो Increase. boiling point कौन हम इनक्रीज हम राइट सो आम जो देखा boiling point सबुठ अधिक ताले ये कहार हम अच्छा आउ गोटे पॉइंट भी हम देखते फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कहार boiling point सबुठ अधिक आयोडीन कारण मास अधिक सो आमर ये जो देखा सबुठ हाईएस्ट boiling point कहार हम C3H7I C3H7I that is P so it है गला C3H7I ठीक अछि ना एटा इज इट करेक्ट C3H7I अछि 101.6 डिग्री ठीक अछि नेक्स्ट तो ए जो MNOP लेटर टा कहा को कोडा दिया हिछि ठीक अछि रैंडमली लिखा हिछि एटा माने नो जे C3H7 दा C3H7Cl दा M C3CH3Br टा N एमिदि नो रैंडम किए कोडा गोटे M ए भितर गोटे M गोटे N गोटे O गोटे P तो ऑलरेडी हमर एटा पळे आसला P पळे आसला 101.6 नेक्स्ट हम जिबा नेक्स्ट तापर ताठो आ टिके कम कार रहइबो C2H5Br तो 101.6 रु कम कोडा अछि टेंपरेचर N 38 डिग्री सेल्सियस सो एन डा कोन हबो C2H5Br ठीक है तो ये हमारा आंसर होगा N is C ऑप्शन नंबर C इज इट क्लियर बुझिएला इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू डिड यू गेट माय पॉइंट और नॉट Yes, sir. ओके मते को जे M आ O कोडा M हबो कोडा O हबो मते निजे निजे को मु किछि कहबिनी which one is M Option A M. Option B O. option A M that is CH3Cl is M okay option B is O very good Barsa तो CH3Br CH3Cl भितर CH3Br boiling point अधिका bromine थिबारु CH3Cl रो boiling point कम as here you will find chlorine only okay let us recheck the answer it is 4 5 रो आंसर टिके चेक कर दो बिकॉज मु प्रिपेयर ही नथली ना तो आंसर भूल गए सर ठीक अछि 4 रो D 5 रो C ओके नेक्स्ट एठी रहिछि गोटे ग्राफ रहिछि and this is your what is the value here you will find that m2 plus give rise to m माने m2 plus m होछि माने एटा कोन होछि एक्चुअली from of the elements titanium to zinc ताले एटा होछि titanium vanadium chromium manganese iron cobalt nickel copper zinc ठीक अछि सो एटा होछि observed value एटा होछि calculated value तो ए जाय ठीक ठाक अछि observed value
को जाए आयरन जाए तापर एक्चुअली ऑब्जर्व वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू भितर टिके डिफरेंस आସୁଛି राइट ग्राफ देखि बुझी पारछो ऑब्जर्व वैल्यू अप टू आयरन ठीक ठाक रोची बट फ्रॉम आयरन onwards द ऑब्जर्व वैल्यू इज समहाउ ऑब्जर्व वैल्यू एंड कैलकुलेटेड वैल्यू देयर इज ए लिटिल बिट डेविएशन इन केस ऑफ कॉपर एंड निकल राइट तो हमर एठी कहै छै M2 प्लस टा M नॉट होची माने एटा कोन होची रिडक्शन ना ऑक्सीडेशन M2 plus is getting to M. It is reduction or oxidation? Reduction. Very good. कहीं ना M2 plus टा M रे convert होला माने dita electron gain हबो so you will get M. So it is an example of reduction. Okay. So it is reduction वाले question कौन अच्छे हमें देखिबार अच्छे. Which of the following reaction? एटा आको बेस करके हमें देखिबा कि which of the following reaction may be involved. So question रही that metal plus concentrated sulfuric acid, metal sulfate plus sulfur dioxide plus water. Okay, metal plus concentrated sulfuric acid, metal sulfate plus sulfur dioxide, metal sulfate माने तुम्हारा SO4 2 minus सहित combine करिवा right. Sulfur dioxide माने SO2 दबो water दबो. So concentrated H2SO4 सहित react करिवा metal. तो को metal टा जनरली रिएक्ट करिवो को मेटल ला रिएक्ट करिवो ए ग्राफ को देखि के हम देखियो पड़ियो तो को मेटल ला रिएक्ट करिवो ना हमर जोटा कोन हे परिवो जोटा जल्दी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करि परिवो सेटा जल्दी रिएक्ट करिवो राइट ना बुझियो नि मेटल माने जल्दी इलेक्ट्रॉन दे दियंती ना हां ना M2 प्लस स्टेट रे मु कहूची M2 प्लस माने कॉपर 2 प्लस गोटे रहिची तमर कौन कौन चार्ट रही गोटे कॉपर 2 प्लस आउ रही CO आउटे टाइटेनियम जिंक CO2 प्लस टाइटेनियम 2 प्लस और जिंक 2 प्लस एवला रही ठीक अच्छे हाँ हाँ मेटल माने जल्दी इलेक्ट्रॉन दे दियंती वेरी गुड ठीक कथा कहला सो एटा मेटल सहित रिएक्ट करबा मेटल एवला SO4 2 माइनस सहित कंबाइन करिकी करेस्पोंडिंग आयन रे कन्वर्ट हो सो कॉपर 2 प्लस रे कन्वर्ट हो कोबाल्ट टा कोबाल्ट 2 प्लस रे कन्वर्ट हो टाइटेनियम टा टाइटेनियम 2 प्लस रे कन्वर्ट हो जिंक टा जिंक 2 प्लस रे कन्वर्ट हो ठीक अछि कॉपर विल बी कन्वर्टेड इनटू कॉपर 2 प्लस कोबाल्ट टा कोबाल्ट 2 प्लस रे टाइटेनियम टाइटेनियम 2 प्लस रे जिंक जिंक 2 प्लस रे कोड रिएक्शन रे जिंक विल बी कन्वर्टेड इनटू जिंक 2 प्लस तो हमको ये रिडक्शन पोटेंशियल दे जाइए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दैट इज रिडक्शन पोटेंशियल सो रिडक्शन पोटेंशियल को बेस करके आम कहवा जे कोटा कौन ठीक अच्छे अच्छा आमर कॉपर कॉपर 2 प्लस रे कोबाल्ट 2 प्लस रे टाइटेनियम जिंक जिंक 2 प्लस रे मत देखिबार अछि हमको देखिबार अछि कहार एक्चुअली कोटा जल्दी आयन रे कन्वर्ट हो कॉपर ना कोबाल्ट ना टाइटेनियम जिंक जते बेले तुम्हारा এই কনসেন্ট্রেটেড H2SO4 রয়েছে কনসেন্ট্রেটেড H2SO4 প্রেজেন্স রে কোটা জলদি আয়ন রে কনভার্ট হবো মানে তার অর্থ আমি কই পারিবা যে কাহার স্ট্যান্ডার্ড রিডকশন পোটেনशियल सबुठु अधिका जोटा सबुठु अधिका से स्टेबल कंपाउंड देबो ठीक अछि अन्य माने भी हेबे किंतु हेला पर भी से बेक हो जाय पारे स्टेबल कंपाउंड देबनी माने कोटा सबुठु अधिका स्टेबल हबो ना जहार रिडक्शन पोटेंशियल अधिका हबो रिडक्शन पोटेंशियल को केमती एटा लिंक है रिडक्शन पोटेंशियल जार अधिका हम तार माने आम बुझा जे सी जल्दी कौन कर पाइबो दैट मीन्स इट कैन बी तुम्हारा रिडक्शन पोटेंशियल जार सब अधिका हम दैट कैन बी ऑक्सीडाइज्ड इजीली रिडक्शन पोटेंशियल जार सब अधिका सी जल्दी ऑक्सीडाइज हो रिडक्शन पोटेंशियल जार सब कम सी धीरे ऑक्सीडाइज हो सो ये लिख पार मोर द रिडक्शन पोटेंशियल more is the oxidizing character right is it clear ना भूल लगुची ना बुझा पड़ना yes sir एटा लिखि दियो रूल टा माने जनरली सब लिखि की ताको अंडरलाइन कर दियो बा किछि किछि जोडी रूल नुवा जिंस पड़ता ताको लिखि दियो मोर द रिडक्शन पोटेंशियल मोर इज द ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर सो रिडक्शन पोटेंशियल सबुठ अधिका ताले हमर कोठी होची कपर कपर सो आंसर कोन हबो आंसर वो कॉपर सो Cu प्लस तामाने तुम्हें कहबो जे सर आउ अन्य गुडा को देखैबेनी कि आउ अन्य गुडा को देखैबो किंतु अन्य गुडा केस रे टिके कम रहबो किंतु कॉपर जल्दी कॉपर 2 प्लस रे कन्वर्ट हे जिवो इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 आउ कन्वर्ट हे गेले से Cu2 प्लस आ SO4 2 माइनस मिसि जिवो
मिसी गले कौन दबो CuSO4 राइट बुझीला मो ओवरऑल रिएक्शन ताले लिखिले कौन हम रिएक्शन टा किए कोई पारे व्हाट इज द रिएक्शन ओवरऑल रिएक्शन Cu plus concentrated H2SO4 give rise to CuSO4 plus SO2 plus water. Is it clear? Yes, sir. Okay. Next आउ भावचे we will cover up to this page 7 8 दुटा क्वेश्चन कर देबा तापरे रखि देबा ओके आउ मते भी पेशेंस नै मोर ठीक है 7 8 जाए रहू आमे माने बेसिक क्वेश्चन इनिशियली डिस्कस कर परिबे तुमे ट्राई भावनी जे मते आज 50 टा क्वेश्चन करिवार थिला आज बा मु सेटटा प्रैक्टिस करिवार थिला पूरा डिटेल्स रे सान गो पे आज मोर हे पलेन डोंट थिंक लाइक दिस वी आर here to discuss all the things that the possible things which can be asked in the examination. Okay, next comes to next question. P given P and here to the reaction between P and Q at constant temperature we will give rise to the product accordingly. So here based on the data what will be the rate of the reaction between P and Q. अच्छा P and Q between compound P and Q sorry एटे P होची तुम्हारा P gives rise to Q is it ना 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 भूल है sorry एटे reaction हो P plus Q give rise to R rest P plus Q give rise to R P plus Q give rise to R P और Q दीटा reactant R दोची product R दोची बा जे कोनो से गोटे product दोची ठीक है तुमको एटे rate बाहर करिवार अछि rate expression कोन हो what is the expression for rate तो एभला क्वेश्चन रे हम कोन करबा let rate is equal to k multiplied by p to the power x q to the power y बा p to the power m q to the power n हमको जणा नै x y केते अब हम एठे x y बाहर करबा it is quite easy I think it will be more easier if I give a hint to you and you will definitely do this तो हमको ये देखा आज कौटी P रो वैल्यू कांस्टेंट रही P रो वैल्यू कोटे कांस्टेंट रही एक्सपेरिमेंट नंबर 1 2 ना 2 3 ना 1 3 कोटे कांस्टेंट रही 2 3 प्रथम 2 3 को नबा सो एक्सपेरिमेंट नंबर 2 एक्सपेरिमेंट नंबर 2 रेट अनुसार जदि हम देखिबा तो हमें एक्सपेरिमेंट नंबर 1 सबुडार रेट आगे लिखि देबा एक्सपेरिमेंट नंबर 1 अनुसार रेट कोन आसीबो k मल्टीप्लाइड बाय p रो वैल्यू केते 0.1 टू द पावर x इनटू तापर एटा केते अछि 0.2 into y अच्छा रेट रो वैल्यू केते रे देछि 1.1 into 10 to the power minus 4 राइट सो एटा दे देछि 1.1 into 10 to the power minus 4 1.1 into 10 to the power minus 4 इक्वेशन नंबर 1 क्लियर एटा बुझियला फर्स्ट इक्वेशन yes sir सेकंड इक्वेशन एक्सपेरिमेंट नंबर 2 रो सेकंड इक्वेशन कोन हो को जने को सुमित को Sumit, we are waiting for your voice. Sumit. Sir, कोई क्वेश्चन ले कोई Second experiment. सर 1 और 2 कंपेयर करा हो नहीं 2 only 2 को नहीं कोई हो 9.91 into 10 to the power minus 4 is equal to हो मुंग लिखि दो छाड़ k into कोबे एटा ए पॉइंट टा कहूछ मु फास्ट आइला सेकंड जल्दी p जगह कौन अच्छी 0.3 टू द पावर x q जगह 0.2 टू द पावर y तापर जस्मिन को थर्ड क्वेश्चन थर्ड एक्सप्रेशन 4.96 with 10 to the power minus 4 is equal to k into p जगह हमरो 0.3 to the power x पड़िबो into sir 0.1 into the to the power y पड़िबो अच्छा वेरी गुड इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू वर्षा तापर कोन कर परिबा कहि परिबो वर्षा कैन यू से व्हाट वी हैव टू डू हियर 1/2 कराई जी वेरी गुड इक्वेशन 1/2 इक्वेशन 1 डिवाइड इक्वेशन 1/2 कर देबा कर देले कोन हे जिवो 1.1 into 10 to the power minus 4 divided by 9.91 into 10 to the power minus 4 is equal to केते आसीबो k
multiplied by 0.1 to the power x into 0.2 to the power y divided by k into 0.3 to the power x into 0.2 to the power y. Cancel कोडा कोडा हबो cancel 0.2y k cancel 10 10 bar minus 4 सॉल्व करो तापर आंसर को कौन हबो सॉल्व कले it is 110 by 991 right एभला हो तो ना 1.1 अछि केते कष्ट क्वेश्चन करिछि न्यूमेरिकल 1.10 हाँ is equal to 0.1 by 0.3 बोले केते हो 1 by 3 to the power x right is it clear yes sir so actually divide तो हबो नहीं I think आंसर कौन देखिए एटा तो डिवीजन हबनी 1 by 3 होछि कि 110 डिवाइड मल्टीप्लाइड बाय 3 हबनी तो no sir it's quite difficult to solve this is it 9.91 or anything else no it is 9.91 एवला बहुत टफ क्वेश्चन दवा कथा ना माने प्रॉब्लम गुडा को सॉल्व करिला टाइम पड़ेबो ना ओटा पला 1 मार्क क्वेश्चन फेरे केते टाइम पाइबो सेडी ओके लेट्स डू कैलकुलेटर कैलकुलेट करिवा 110 by 911 केते आछे सॉल्व इट 0.11 0.11 ओके 1 by 3 केते आछे 10 0.33 something 0.33 to the power x take logarithm on both sides भगवान कितने टॉप कर देला 0 log 0.11 is equal to x log 0.33 हाँ हे जो I think he it might be not so difficult it seems to be but not so so further x is equal to केते आसीबो log 0.11 by log 0.33 सॉल्व कलो log 0.11 सॉल्व करी कलो केते आसी log 0.11 log 0.33 एवला क्वेश्चन पढ़ते हां नहीं 1 by 3 आसी आर यू श्योर log 0.11 log 0.33 वैल्यू केते log 0.11 no sir log 0.11 रो वैल्यू केते क्वेश्चन गिवन करिया कथा ना हम तो लॉग किछ नहीं से अपरा ए क्वेश्चन ता भाबजे क्वेश्चन ता एटा एक्चुअली एते डिफिकल्ट रहया कथा न एटा एक्चुअली 9 पॉइंट अन्य किछ रहया कथा बा क्वेश्चन देखिले जदी मॉडिफाई करले जाना पड़ियो एटा कोन होची ना लाइक एटा सुनो 110 into 9 एटा 9.90 रहया कथा ठीक है लेट इट बी 9.90 लेट करेक्ट द क्वेश्चन ला don't go in details let correct the question like 9.90 it should be 9.90 there is a question mistake you should not face this such type of question actually it should be 9.90 solve kala kete hochi etu katti dio etu ti kato e time बहुत lagibo don't do this 9.90 let's check it as 9.90 कौन होची एटा तो एटा को कले 1 by 9 राइट 1 by 9 1 by 9 माने 1 by 3 रो पावर स्क्वायर सो 1 by 3 दैट इज x सो x इज इक्वल टू केता आसिला 2 राइट यस सर सो x इज इक्वल टू 2 राइट सो एटा हमरा x पळे आसिला 2 वैल्यू पळे आसिला ओके सो यू आर पुटिंग हियर x इज इक्वल टू 2 माने हमरा पॉसिबल ताले कोड हाबो ऑप्शन नंबर ए राइट
आम जीवा दरकार नहीं y बाहर करने कारण x जगह कोटा अच्छी पावर x जगह पावर कोटा अच्छी 2 2 A ऑप्शन रो सो ऑप्शन ए हम बट आम रीचेक करदे कि एग्जाम रे तुमको रीचेक करने को भी टाइम न थाए सो यू शुड नॉट डू लाइक दिस तुम सॉल्व कल फटफट जीवार अच्छे ठीक अच्छे ये तुमको मुझे स्लो रे पढ़ाऊँ सो दैट जो पिला माने टिके पोर थे से धरी पारे ना मत भी स्पीड करी पढ़ार थिला ओके नेक्स्ट आम जा क्या डिवाइड करवा कोटा कोटा ना ऑलरेडी 2/3 करवा 2/3 करवा ना इक्वेशन 2/3 इक्वेशन 2 by इक्वेशन 3 तो सॉल्व कले कौन हम इक्वेशन 2 रे कौन अच्छी एटा 9.90 है करेक्शन है 9.9 into 10 to the power minus 4 divided by 4.96 into 10 to the power minus 4 is equal to k into 0.3 ro power x into 0.2 ro power y divided by k into 0.3 to the power x into 0.1 to the power y. So k cancel 0.3 to the power x 0.3 to the power x cancel 10 to the power minus 4 10 to the power minus 4 cancel. Further 9.1 by 4.9 केते आसीबो 4.96 so it is 4.96 into 2 कले हो छी कि 4.96 2 6 12 2 रख रे कि 2 8 कौन इट्स 9.92 लेट इट जो एग्जाम रे एक्चुअली क्वेश्चन रहउची एठी की अप्रोक्सीमेट नहीं कि करिया पड़ियो बेले बेले एग्जाम रे एटा 9.90 अछि ठीक अछि बट यू शुड टेक एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू लाइक इट इज नियरली इक्वल टू याको जदी हम सॉल्व करबा इट इज नियरली इक्वल टू योर सॉल्व कले इट इज नियरली इक्वल टू 12 2 आसीबो ठीक अछि इट इज नियरली इक्वल टू 2 बट एग्जैक्टली 2 आसीबनी 1.98 समथिंग आसीबो डिवाइड कले सो यू शुड डू लाइक दिस हला हमको एमती ही सॉल्व करिया पड़ो सेटा भी सॉल्व कले समथिंग 1/9 आसीबो नियर बाय सो एटा 2 is equal to 0.2 by 0.1 divided by y so that is 2 to the power y 2 to the power 1 so y is equal to 1 is it clear एटा को टिके तुमको मैनिपुलेट करिया पड़ो एग्जैक्ट वैल्यू पुट करिके करि होबा नहीं किंतु एग्जैक्ट आंसर यार किछ अलगा जोटा ऑप्शन रे ही नहीं सो एभला क्वेश्चन रे it should be better you should use an approximate value approximate CBSE रो क्वेश्चन बोर्ड रो क्वेश्चन माने निहाती भाबे से भला किछि भूल आमे कहि परिबा नहीं CBSE बोर्ड रो क्वेश्चन ना सो एटी गोटे approximate नहीं कर परिबो इज इट क्लियर सो एटार आंसर ठीक अछि y2 पळे आसला x सॉरी y1 आसी गला x2 आसी गला राइट इज इट क्लियर बुझियला yes sir next question is the next question 8 नंबर तो पर करवा इज इट ओके काली ठू हमें करवा प्रोबेबली हमको गोटे 1 वीक लग जिवो 1 वीक और 2 वीक लग जिवो गोटे सेट को प्रैक्टिस करिया रे बट यू विल हैव अ डिटेल प्रैक्टिस तुम गोटे डिटेल्स पळे आसीबो किंतु बाकी तुम निजे प्रैक्टिस करिया को पड़िबो कहीं ना मु प्रैक्टिस करई पारिबे कि नहीं आई कैन नॉट से बट 21 डेज रे एटलीस्ट आई एम टारगेटिंग टू cover minimum 3 sets 3 to 4 sets VST so that it might be easier for you to have that look but जो दिन मु free पाइब like Sundays other days I will have a definitely I will go for it and will have a quick revision जो exam time आसीबो exam time रे quick revision आ details पढ़ेबिनी फटफट करी करी जीवे okay quick revision करी करी जीवे if possible not so explanation okay thank you I will not taking your time more thank you for joining the class thank you all of you for this class again we will meet tomorrow again at